let's get started. In this one, we are discussing that is essay 805. So hereby we are discussing standards, that is the essay 805. Earlier we have discussed the things relating to forming and attaching part of essay 800. तो essay 805 किस बारे में बात करता है, essay 805 क्या है and all about. तो ऐसे 805 जो है दैट इज द स्पेशल कंसिडरेशन, दैट इज द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. या तो क्या होगा, ऑडिट होगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर कुछ जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, अकाउंट्स है, आइटम्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो सारे. ये जो स्टैंडर्ड्स होता है ऑडिटिंग, ऐसे 100 से 700 की सीरीज अप्लाई होता है टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर टू बी अडॉप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अप्लाइड टू ऑडिट ऑफ अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये ऐसे डील करता है विद स्पेशल कंसिडरेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ दोज एसेज इन एन ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट. हम क्या बोलते हैं, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर होगा इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. इट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, दैट इज एसे 800. उसके बाद हम बोलते हैं ऐसे 805 डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑडिटर. ये जो है वो रिपोर्ट ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑडिटर पे अप्लाई नहीं होता है. इशू एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क परफॉर्म ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पोनेंट एट अ रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का जब वो अप्लाई करता है एसेज इन एन ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, अकाउंट होता है, आइटम्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज टू एड्रेस appropriately the special consideration जो relevant होता है to the acceptance of the engagement, the planning and performance and forming an opinion. Now what is the single financial statement? Single financial statement क्या होता है, is to be distinguished from a complete set, because the single financial statement होता है that is distinguished from a complete set of financial statement. For example, the cash flow is a single financial statement. हम क्या बोलते हैं, जो cash flow है it's the example of the single financial statement. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑडिट कर रहे हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली? तो हियर द एग्जांपल इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट. What is the element of financial statement? Element of a financial statement, element and element account or items of financial statement. For example, the trade receivable, cash and bank balance. A single financial statement or जो specific element होगा financial statement including the related notes which ordinarily comprising a summary of a significant accounting policy and other explanatory information जो भी relevant है to the financial statement or the element. Consideration when accepting such engagement, application of essays, essay 200 requires तो ऑडिटर की आप कैसे कंप्लाई करोगे विद सारे के सारे एसेज के साथ जो कि रेलेवेंट होंगे टू द ऑडिट. इन अ केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज irrespective whether the auditor is also engaged to audit the entity's complete set of financial statement. If the auditor is not also engaged to audit the entity's complete set of financial statement, the auditor shall determine whether the audit of a single financial statement or the specific elements of those financial statement in accordance with the essays is practicable. ऐसे 200 रिक्वायर द ऑडिटर आपको कंप्लाई करना होगा रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट. जितने भी ऐसे है जो कि रेलेवेंट होंगे टू दी ऑडिट. इट ऑल्सो रिक्वायर द ऑडिटर आपको कंप्लाई करना होगा किसके साथ, with each requirement of essays unless in the circumstances of the audit. The entire essay is not relevant or the requirement is not relevant because it is conditional and condition does not exist. In exceptional circumstances, the auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement in an essay by performing the alternative audit procedures to achieve the aim of that requirement. आपको कंप्लायंस करना होगा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे जो भी रेलेवेंट है टू द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट may not be practicable when the auditor is not able to engage to audit the entity's complete set of financial statement. In such a cases, auditor does not have the, क्योंकि अगर सपोज आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहे हो तो आप उस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके भी नहीं कर सकते बिकॉज आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ऑफ द एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा यू डज नॉट हैव द एविडेंस नहीं होंगे आपके पास about the general quality of the accounting records or accounting information that would be acquired in an audit of entities complete set of financial statement. Accordingly, the auditor may need further उसे और ज़्यादा further evidence चाहिए होंगे because you do not have the proper understanding
of the financial statement of its internal control accounting records, and you do not have the evidence नहीं है आपके पास about the general quality of the accounting records and other accounting information that would be acquired in an audit of entities complete set of financial statement. Accordingly, the auditor may need क्या चाहिए होगा, the auditor will need the further evidence to corroborate the audit evidence acquired from the accounting records. Accordingly the auditor may need further evidence so that you can corroborate the evidence acquired from the accounting records. In case of an audit of a specific element of financial statement, certain assets require audit work that may be disproportionate to the element being audited. For example, although the requirement of SA 570 are likely to be relevant in the circumstances of an audit of a schedule of account receivable, complying with those requirements may not be practicable because of the audit effort required. If the auditor concludes that the audit of single financial statement or the specific element of financial statement in accordance with the essays may not be practicable, the auditor may discuss with the management whether another type of engagement might be more practicable. देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसे 210 रिक्वायर द ऑडिटर आपको डिटरमाइन करना है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी अप्लाइड होगा इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. In case of audit of single financial statement or the specific element of financial statement, this shall include whether application of the financial reporting framework will result in a presentation that provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the information conveyed in the financial statement और जो एलिमेंट है और जो इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट. उसके बाद a single financial statement हो या फिर specific element हो, financial statement में भी prepare किया जाएगा in accordance with the applicable financial reporting framework that is based on the financial reporting framework which is established by an authorized or recognized standards setting organization and preparation of a complete set of financial statement, for example the financial reporting framework. If this is the case, the determination of acceptability of applicable financial reporting may involve considering whether the framework includes all the requirement of framework or which it is based that are relevant to the presentation of single financial statement or a specific element of a financial statement that provide adequate disclosure. उसके बाद consideration when planning and performing the audit. In planning and performing the audit of a single financial statement or जो specific element होगा financial statement, the auditor shall adapt जितने भी essays are relevant to the audit as necessary in the circumstances of the engagement. कि क्या necessary है for the circumstances of the engagement. The relevance of each of the essays require careful consideration. Even only a specific element of financial statement is subject of the audit. Essays such as Essay 240, 550 and Essay 570 are in principle relevant. This is because the element could be misstated as a result of fraud, the effect of related party transaction or incorrect application of the going concern basis of accounting under the applicable financial reporting framework. ऐसे 260 require the auditor आपको determine करना होगा appropriate person within the entity's governance structure with whom to communicate. ऐसे 260 notes that in some cases all of those charged with governance are involved in managing the entity and the application of communication requirement is modified to recognize this position. When complete set of financial statement is also prepared by the entity, those persons responsible have for the oversight of the preparation of single financial statement or the element may not be the same as those charged with governance responsible for the oversight of the preparation of a complete set of financial statement. जब आप ऑडिटिंग करोगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंजंक्शन विद ऑडिट ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the auditor may be able to use the audit evidence obtained as a part of audit of the entity's complete set of financial statement. In audit of financial statement or the element essays, however, require the auditor to plan and perform the audit of financial statement or element to obtain the sufficient appropriate audit evidence on which base the opinion on the financial statement or on the element. जो भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्राइज होगा द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या हो सकता है मैनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग देयर रिलेटेड नोट्स आर इंटर रिलेटेड. अकॉर्डिंगली व्हेन ऑडिटिंग ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू कंसिडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कोई एलिमेंट होगा इन आइसोलेशन. Consequently, the auditor may need to perform करना पड़ेगा उसे procedures in relation to the interrelated items to meet the objective of the audit. Furthermore, the materiality determined for a single financial statement or the specific element of financial statement may be lower than the materiality determined for the entity's complete. तो हम क्या बोलते हैं कि materiality जो determine होगी for single financial statement और या फिर specific element of वो obviously lower होगी than the materiality जो determine होती है for the complete set of financial statement. This will affect करेगा the nature, timing and extent of audit procedure and evaluation of the uncorrected misstatement.
उसके बाद आता है हमारा दैट इज फॉर्म ऑफ ओपिनियन. ऐसे 210 रिक्वायर्ड दैट द एग्रीड आइटम्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूड द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशू बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The auditor shall consider whether the expected form of opinion क्या appropriate है in the circumstances. The form of opinion is to be expressed by the auditor depend करता है on the applicable financial reporting framework and any application laws and regulation in accordance with the revised SA 700. So हम express करेंगे एक unmodified opinion on a complete set of financial statement prepared in accordance with the fair presentation framework. The auditor's opinion, unless otherwise required by the law and regulation, uses one of the following phrases. The financial statement present करता है fairly in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. So financial statement है that will gives a true and a fair view in accordance with the applicable financial reporting framework and जब express किया जाएगा an unmodified opinion on a complete set of financial statement prepared in accordance with the compliance framework. So there may be the fair presentation framework, there may be the compliance framework. The auditor's opinion state that the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. In a case of single financial statement या फिर हो सकता है case of specific element of financial statement, the applicable financial reporting framework may not be explicitly address the presentation of financial statement or the specific element of financial statement. This may be the case when the applicable financial reporting framework is based on the financial reporting framework established by an authorized or recognized standard setting organization for the preparation of a complete set of financial statements. The auditor therefore consider करेगा क्या जो expected form है of opinion is appropriate in light of the applicable financial reporting framework. नाउ अब हमारे आ जाते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे. तो हो सकता है ये फैक्टर जब भी होता है ना एग्जामिनर यही से क्वेश्चंस पूछते हैं नॉर्मली. तो कौन से फैक्टर्स है हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है ऑडिटर का कंसिडरेशन एज टू वेदर द यूज ऑफ द फ्रेजेस क्या वो प्रेजेंट कर रहा है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड ट्रू. तो हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है कौन से फैक्टर्स है हम बोल रहे हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेगा ऑडिटर का कंसिडरेशन. कौन से ऐसे फैक्टर्स है हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है द ऑडिटर्स कंसिडरेशन एज टू वेदर द यूज ऑफ द फ्रेश क्या प्रेजेंट करता है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट गिव्स अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन इंक्लूड whether the applicable financial reporting framework is explicitly or implicitly restricted to the preparation of a complete set of financial statement. हम क्या बोलते हैं whether the applicable financial reporting framework is explicitly क्या जो applicable financial reporting framework है क्या वो explicitly या फिर वो implicitly restrict कर रही है to the preparation और complete set of financial statement. तो हम क्या बोलते हैं कौन से factors है कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है ऑडिटर्स कंसिडरेशन एज टू क्या जो फ्रेश है क्या वो प्रेजेंट कर रहा है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट क्या वो गिव कर रहा है ट्री एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन इंक्लूड कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ऑडिट कंसिडरेशन एज टू वेदर दी फ्रेज प्रेजेंट फेयरली क्या जो फ्रेज है हमारा प्रेजेंट फेयरली कौन से फैक्टर है. तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको देनी है जिस वर्ड्स को वो है कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं द ऑडिटर्स कंसिडरेशन वेदर टू यूज फ्रेज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन द ऑडिटर्स. तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है बाय द इंस्टीट्यूट. तो हम क्या जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली रेस्ट्रिक्ट करी है टू द प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल. तो हमारी हम क्या बोलते हैं वेदर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या जो हमारी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली रेस्ट्रिक्ट कर रही है टू द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या जो हमारी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या जो हमारी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लिसिटली रेस्ट्रिक्ट कर रही है to the preparation of a complete set of financial statement, whether the single financial statement or the specific element. Single financial statement, for example, it is cash flow, or the specific element of payable, receivable, and all of a financial statement, whether the single financial statement or the क्या जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो
एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करिए, रेस्ट्रिक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल, क्या वो कंप्लाई करिए फुल ईच ऑफ दोज रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर एलिमेंट इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दी specific element of a financial statement including the related disclosure. If necessary to achieve the fair presentation, provide कीजिए disclosure beyond those specifically required by the framework. In exceptional circumstances, depart from the requirement of that framework. उसके बाद हम बोलते हैं कि जो भी ऑडिटर का डिसीजन होगा, as to whether the expected form of opinion is a matter of professional judgment, it may be affected by whether the used phrase present fairly in all material respect gives a true and fair, क्या वो explicitly implicitly restrict कर रही है, क्या जो financial reporting framework है explicitly implicitly restrict कर रही है for the preparation of a complete site of financial, या जो single financial statement और जो elements है of the items of the financial statement, क्या वो comply कर रही है, क्या वो comply कर रही है fully with each of the requirement of the framework जो कि relevant है to the particular account, to the particular financial statement, particular element in presentation of financial statement, और जो specific element है और जो financial statement including the related disclosure, क्या necessary है achieve करना presentation provide disclosure beyond those specifically required by the framework in the exceptional circumstances जो भी depart होंगे from the requirement of the framework. जो भी ऑडिटर का डिसीजन होगा as to the expected form of opinion is a matter of professional judgment. It may be affected by whether the use of the phrases present fairly in all material respect gives a true and fair view in the auditor's opinion on a single financial statement or just specific element of a financial statement prepared in accordance with the fair presentation framework is generally accepted in the particular jurisdiction. कैसे आप फॉर्म करोगे ओपिनियन, कैसे आप रिपोर्ट करोगे कंसिडरेशन, कैसे आप फॉर्म करोगे ओपिनियन, कैसे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, कैसे आप फॉर्म करोगे ओपिनियन, कैसे आप रिपोर्ट करोगे ऑन द कंसिडरेशन. जस्ट अ मिनट व्हाट हैपेंस, जस्ट चार्ज हो रहा है पीसी. उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन. फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है, जो फॉर्मिंग है ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर जो है वो अप्लाई करेगा द रिक्वायरमेंट इन रिवाइज एसए 700 व्हेन एप्लीकेबल एसए 800 adapted as necessary in the circumstances of the engagement. In doing so, the auditor is also required to apply the reporting requirement in other essays adapted as necessary in the circumstances of the engagement and may find the consideration address in essay 700. उसके बाद हम बोलते हैं रिवाइज essay 700 requires the auditor in forming an opinion to evaluate whether the financial statement provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the effect of material transaction and event of information conveyed in the financial statement. So, in the case of material transaction and event of information conveyed in the financial statement, in case of a single financial statement या फिर the specific element of financial statement, it is important that the financial statement or जो भी element including the related notes in view of the requirement of applicable financial reporting framework provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the information conveyed in the financial statement और जो भी element है, जो भी fact है, transaction and event of information conveyed in the financial statement और element क्या है. उसके बाद आता है हमारा गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है ऑन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिस्क्रिप्शन क्या है इन ऑडिटर्स रिपोर्ट और ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न में नीड टू बी अडेप्टेड एज नेसेसरी. जो भी डिस्क्रिप्शन होगा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑल्सो नीड टू बी अडेप्टेड एज नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन हाउ ऐसे 570 अप्लाइज इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंगेजमेंट. की ऑडिट मैटर ऐसे 700 बोलता है रिक्वायर्स ऑडिटर आपको कम्युनिकेट करना होगा की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 701
for audit of a complete set of general purpose financial statement of a listed entity. दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है ऐसे 720 में जो कि डील करता है विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द इन्फॉर्मेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस एसेस रिपोर्ट्स कंटेनिंग और accompanying a single financial statement or just specific element of financial statement, the purpose for which is to provide other owners or similar stakeholders with information on a matter presented in a single financial statement or specific element of financial statement are considered to be annual report for the purpose of SS 720 when the auditors determine that the entity planned to issue such a report, the requirement of SS 720 apply to the audit of a single financial statement or the element. जो भी signature होगा of the auditors report shall be signed. The report is signed by the auditors, that is the engagement partner, in his personal name. Where the firm is appointed as the auditor, the report is signed in the personal name of the auditors and in the name of audit firm. The partner proprietor signing the auditor's report also need to mention the membership number signed by the Institute of Chartered Accountant of India. They also include the registration number of the firm wherever applicable as allotted by the ICIs in the auditor's report signed by them. This is require the auditor to consider the implications. If any of certain matters included in the auditor's report on a complete set of financial statement for the audit of single financial statement, or to be specific elements of financial statement for the auditor's report thereon. कंसिडर कीजिए क्या जो मैटर इंक्लूडेड है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो रेलेवेंट है टू द कंटेक्स्ट ऑफ एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोफेशनल जजमेंट. अब फिर से हमारे पास कुछ फैक्टर पहले तो हमने बोला था वो फैक्टर्स जो कि रिलेट करते थे द ट्रू फेसेस प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट टू एंड फेयर उससे रिलेटेड थे वो फैक्टर थे. अब आ जाते हैं हम कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रेलेवेंट हो गए इन कंसिडरिंग दोस इम्प्लीकेशन इंक्लूड. Nature care of the matter being described in the auditor's report on a complete set of financial statement, extent to which it relate to what is included in the single financial statement or the specific elements of financial statement. तो हम क्या बोलते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोज इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोज इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड. नेचर क्या है मैटर का being described in the auditor's report on a complete set of financial statement, the extent to which it relate, what is included in the single financial statement or the specific elements of financial statement. The pervasiveness of the matter described in the auditor's report on the complete set of financial statement. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करने होंगे कौन से ऐसे फैक्टर दैट में बी रेलेवेंट इन कंसिडरिंग दोस इम्प्लीकेशन इंक्लूड. कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोस इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड्स. नेचर क्या होगा ऑफ द मैटर बीइंग described in the auditor's report on a complete set of financial statement. Extent क्या है to which it relate, what is included in the single financial statement or specific element, what is included in the single financial statement or the specific element of financial statement. The pervasiveness of the matters क्या है pervasive, what will be the pervasiveness of the matters described in the auditor's report in a complete set of financial statement. The nature and extent of the difference between the applicable financial reporting framework. Nature and extent क्या difference between the auditor's report on a complete set of financial statement. हम क्या बोलते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है हमें बताने होंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है हमें डिस्कस करने होंगे कि तो नेचर क्या मैटर्स दैट इज बीइंग डिस्कस in the auditor's report on a complete set of financial statement and the extent to which it relate, what is included in the single financial statement can include करना in the single financial statement or the specific element of financial statement. The pervasiveness of the matter described in the auditor's report on a complete set of financial statement. What will be the nature and extent of the difference between the applicable financial reporting. तो हम क्या बोलते हैं that what will be the nature and extent क्या होगा difference between the applicable financial reporting framework. The extent of the difference between the period covered by the complete set of financial statement compared to the period or date of a single financial statement or element of the financial statement. The time elapsed since the date of the auditor's report on a complete set of financial statement. Let's recall it together again and again we need to recall because ये जो है particular question ये तो एग्जाम में आने ही वाला है. So let's recall it together. कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोस इंक्लूड्स. किस में आता है ये ऐसे 700 के अंदर आता है कि फॉर्मिंग इन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग इन आउट. तो कौन से ऐसे फैक्टर जो है वो रेलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोस इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड्स.
कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि रेलिवेंट होंगे इन कंसीडरिंग दोज इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड नेचर ऑफ द मैटर बीइंग डिस्क्राइब इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या एंड द एक्सटेंट टू व्हिच इट रिलेट व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंक्लूडेड होगा इन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो व्हाट विल बी द नेचर दैट बीइंग what will be the nature of the matter being described in the auditor's report हम क्या बोलते हैं nature of the matter कौन से nature है of the matter which is being described in the auditor's report and a complete set of financial statement and extent to which it relates to what is included in the single financial statement में क्या include होगा और the specific element of financial statement what will be the pervasiveness क्या होगा of the matter in the auditor's report of a complete set of financial statement तो what will be the pervasiveness of the matters हम क्या बोलते हैं what will be the pervasiveness क्या होगा of the matter का तो हम क्या बोलते हैं nature of the matter that is being described in the auditor's report in a complete set of financial statement and what will be the extent to which it relates what is included in the single financial statement क्या include होगा what will be included in the single financial statement और what will be the हम क्या बोलते हैं what will be included in the single financial statement what will be included in the single financial statement एंड दी स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नेचर ऑफ द मैटर तो सबसे पहले आ जाता है नेचर क्या होगा कौन से ऐसे फैक्टर होंगे तो नेचर क्या होगा ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके और स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेके हम क्या बोलते हैं नेचर क्या होगा मैटर का विच इज बीइंग डिस्क्राइब इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर क्या होगा मैटर्स का what will be the nature of the matter which is being described in the auditor's report in a complete set of financial statement and the extent to which it relate what is included in the single financial statement में क्या होगा और specific elements of financial statement pervasiveness क्या होगा nature क्या होगा matter का number one pervasiveness क्या होगा matter का nature and extent क्या होगा difference between the applicable financial reporting difference क्या है एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस नेचर क्या है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस क्या है एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस क्या है बिटवीन द पीरियड कवर्ड बाय द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बाय द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारे फैक्टर्स है एंड द टाइम इलैप्स सिंस द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और कौन सा ऐसा टाइम इलैप्स हो गया है हम डिस्कस करें कौन से फैक्टर है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसीडरिंग दिस इम्प्लीकेशन इंक्लूड कौन से फैक्टर्स होंगे हम क्या बोल रहे हैं कौन से फैक्टर्स होंगे दैट मे बी रेलेवेंट दैट मे बी हम क्या बोल रहे हैं कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे कौन से फैक्टर्स होंगे हम क्या बोल रहे हैं कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसीडरिंग दिस implication that include the following हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसीडरिंग दिस इम्प्लीकेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि रेलेवेंट होंगे इन कंसीडरिंग दिस इम्प्लीकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे
कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रिलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दिस इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग? कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि रिलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दिस इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड द फॉलोइंग? नंबर 1, सबसे पहले हमें बताना होगा कि सबसे पहले हमें क्या बताना होगा? नेचर ऑफ द मैटर। सबसे पहले आपको क्या बताना है? नेचर ऑफ द मैटर। सबसे पहले आपको बताना है नेचर ऑफ द मैटर। नेचर ऑफ द मैटर क्या डिस्क्राइब इन दी एप्लीकेबल जो भी है दी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एक्सटेंट टू व्हिच इट रिलेट्स टू what is included in the single financial statement or the specific element. Nature of the matter, सबसे पहले हमें क्या बताना होगा? सबसे पहले हमें बताना होगा what will be the nature of the matter. Nature of the matter, उसके बाद हमें बताना होगा the pervasiveness of the matter. सबसे पहले बताना है हमें नेचर ऑफ द मैटर क्या है, देन परवेसिवनेस ऑफ द मैटर क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट क्या ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड एक्सटेंट क्या ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो नेचर ऑफ द मैटर क्या है, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट क्या ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड, तो हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि रिलेवेंट होंगे, कौन से फैक्टर्स है जो कि रिलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दिस इम्प्लीकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग? कौन से फैक्टर होंगे? तो हमें बताना है नेचर ऑफ द मैटर क्या है, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर क्या, डिफरेंस क्या टू द एक्सटेंट बिटवीन, हम क्या बोलते हैं डिफरेंस क्या है, किस में क्या डिफरेंस है, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल एफआरएफ, हम क्या बोलते हैं डिफरेंस क्या है बिटवीन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड, क्या एक्सटेंट क्या है द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड बाय द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द period covered by the single financial statement. उसके बाद time elapsed since the date of auditor's report on the complete set of financial statement. Time elapsed हम क्या बोलते हैं that what will be the time elapsed क्या है, time elapsed since the date of auditor's report on the complete set of financial statement. What will be the time elapsed since the date of the auditor's report on the complete set of financial statement. तो हम क्या बोलते हैं कौन कौन सा factor that you need to consider, हम क्या बोलते हैं कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो नेचर ऑफ द मैटर क्या है, नेचर ऑफ द मैटर क्या है, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर क्या है, द डिफरेंस क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड द एक्सटेंट, हम क्या बोलते हैं डिफरेंस क्या है बिटवीन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस क्या है बिटवीन द पीरियड कवर्ड बाय द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द टाइम इलेप्स्ड, टाइम इलेप्स के अंदर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट, हम क्या बोलते हैं कितना टाइम इलेप्स है सिंस द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द टाइम इलेप्स, टाइम इलेप्स क्या है, व्हाट विल बी द टाइम इलेप्स सिंस द डेट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, what will be the time elapsed since the date of auditor's report, हम क्या बोलते हैं the time elapsed since the date of auditor's report on a complete set of financial
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है। तो फैक्टर्स क्या है जो कि रेलेवेंट होगा इन कंसिडरिंग दोस implication that includes the following. तो what will be the factors? कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, हम क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि रिलेवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दोज इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे दैट मे बी रेलिवेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे दैट मे बी रेलिवेंट इन कंसिडरिंग दोज इम्प्लीकेशन दैट इंक्लूड नेचर ऑफ द मैटर, क्या है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैटर which is being described in the auditor's report on the complete set of financial statement and the extent of which relate what is included in the single financial statement, or what will be the nature of the matter, the pervasiveness of the matter, the nature and the extent of the difference between, हम क्या बोलते हैं, the nature and the, what will be the difference between the nature and the extent of the applicable financial reporting framework, और क्या है द नेचर एंड एक्सटेंट, ये हो गया। फिर एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस क्या, व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड बाय द, what will be the extent of difference the period covered by the single financial statement or the complete set of financial statement, और कितना टाइम elapsed हुआ है since the auditors report on a complete set of, कितना टाइम elapsed हुआ है, हम क्या बोलते हैं, कितना टाइम elapsed हुआ है since the auditors report on a complete set of financial statement, ये सारा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फॉर एग्जाम्पल in the case when there is a qualification of the auditor's opinion in relation to the account receivable in the auditor's report on a complete set of financial statement, and in the single financial statement include the account receivable, जिसमें क्या आएगा account receivable और specific element of financial statement relates to account receivable, it is likely that there would be implication. उसके बाद for the audit, on the other hand, if the qualification of the auditor's report on a complete set of financial statement relates to classification of the long-term debt, then it is less likely that there would be implication for an audit of a single financial statement, that is statement of a profit or loss, or if the specific element of financial statement relates to account receivable. Inclusion of reference to the auditor's report on a complete set of financial statement, even when certain matter included in the auditor's report on a complete set of financial statement do not have implication for the audit or for the auditor's report on a single financial statement or the specific element of financial statement. The auditor may deem it appropriate to refer to the matter in the OM para in the auditor's report on a single financial statement और जो भी specific element है of the financial statement as per ऐसे 706. For example, the auditor may consider it appropriate to refer in the auditor's report on a single financial statement or a specific element of financial statement to a material uncertainty related to going concern action included in the auditor's report on a complete set of financial statement. If the auditor undertakes an engagement to report on a single financial statement or a specific element, और हम क्या बोलते हैं, or what, or the specific element of a financial statement in conjunction with the engagement to the audit of entity's complete set of financial statement, the auditor shall express a separate opinion for each engagement. The audited single financial statement or the audited specific element of financial statement may be published together with the entity's audited complete set of financial statement. If the auditor concludes that the presentation of single financial statement or the specific element of financial statement does not differentiate it sufficiently from the complete set of financial statement, the auditor shall ask management to rectify the situation. The auditor shall also differentiate the opinion on the single financial statement or the specific element of financial statement from the opinion on the complete set of financial statement. The auditor shall not issue the auditor's report containing the opinion on a single financial statement or the specific element of financial statement until satisfied with the differentiation. Considering the implication of certain matter included in the auditor's report on an entity's complete set of financial statement for the audit of a single financial statement or the specific element of financial statement and for the auditor's report thereon. If the auditor's report on an entity's complete set of financial statement include, हम क्या बोलते हैं, if the auditor's report on the entity's complete set of financial statement that includes a modified opinion in accordance with, हम क्या बोलते हैं, what will exactly be the case? A modified opinion in accordance with SA 705, an EOM para or OM para in accordance with SA 706, a material uncertainty जो कि relate करती है to the going concern section in accordance with SA 570, a statement जो कि describe करती है uncorrected material misstatement of other information in accordance with SA 720. The auditor shall consider the implication, if any, that this matter may have for the audit of single financial statement or the specific element of financial statement and for the auditor's report thereon. Adverse opinion or disclaimer of opinion in the auditor's report on the entity's complete set of financial statement.
अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है that it is necessary to express an adverse opinion and disclaimer of opinion on the entity's complete set of financial statement as a whole. Revised SA 705 does not permit the auditor to include in the same auditor's report an unmodified opinion on a single financial statement that forms part of those financial statement or the specific element of those financial statement. This is because such an unmodified opinion would contradict the adverse or disclaimer of opinion on the entity's complete set of financial statement as a whole. If the auditor अगर conclude करता है that it is necessary to express an adverse opinion and disclaimer of opinion on the entity's complete set of financial statement as a whole, but in a context of a separate audit of a specific element is included in those financial statements, the auditor nevertheless consider it appropriate to express an unmodified opinion on that element. The auditor shall only do so if the auditor is not prohibited. ये वाला part भी importantly individually important बन जाता है. तो अब क्या बोल रहे हैं हम? If the auditor concluded it is necessary to express an adverse opinion and disclaimer of opinion on the entity's complete set of financial statement as a whole, but in the context of a separate audit of a specific element that is included in the financial statement, the auditor nevertheless consider it appropriate to express an unmodified opinion on that element, and the auditor shall only do so if so. तो हम ये बात कर रहे हैं, this will be the case. The auditor is not prohibited by law or regulation from doing so. Auditor जो है हम क्या यहाँ लिख भी सकते हैं कि तो adverse opinion or what? Disclaimer of opinion. The auditor is not prohibited by, हम क्या बोलते हैं, the auditor is not prohibited ना हो by, the auditor is not prohibited by law and regulation from doing so. हम क्या बोलते हैं, the auditor is not prohibited by law and regulation from doing so, that the opinion is expressed in the auditor's report that is not published together with the auditor's report containing the adverse opinion and disclaimer of opinion. The element does not constitute a major portion of the entity's complete set of financial statement. और हम क्या बोलते हैं कि the element does not constitute the element does not constitute a major portion of entities the auditor is not prohibited by, हम क्या बोलते हैं, that where the auditor is not prohibited by law and regulation from doing so, adverse and disclaimer opinion और बता दीजिए, and the element does not constitute a portion of the entities, and the हम क्या बोलते हैं, the element does not constitute a major portion, the element does not constitute a major portion of the entity's complete set of financial statement. The auditor shall not express an unmodified opinion on a single financial statement or a complete set of financial statement if the auditor has expressed an adverse opinion
or disclaimer of opinion on a complete set of financial statement as a whole. This is a case even if the auditor's report on a single financial statement is not published together with the auditor's report containing the adverse opinion and disclaimer of opinion. This is because a single financial statement is deemed to constitute a major portion of those financial statements. In the auditor's report on an entity's complete set of financial statements, the expression of a disclaimer of opinion regarding the result of operation and cash flow, where relevant and unmodified opinion regarding the state of affairs is permitted since the disclaimer of opinion is being issued in respect of result of operation and the cash flow only and not in respect of the financial statement as a whole. फिर आते हैं हम ऐसे 800-805 डू नॉट ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस. तो इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी दी एग्जांपल्स. अब हमने ऐसे 800 में भी पढ़े थे एग्जांपल्स क्या थे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के. अब हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल्स क्या है ऐसे 805 के अंदर. स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट अलाउंस जो है फॉर डाउटफुल डेट्स, रिसीवेबल इन्वेंट्री, द लायबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट और अ प्राइवेट पेंशन प्लान, the recorded value of identified intangible asset or the liability for incurred but not reported claims in an insurance portfolio including the related notes. So what will be the example of specific elements, accounts और items of financial statement. हम क्या बोलते हैं, कौन से examples होंगे, कौन से एग्जाम्पल्स होंगे. तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंट रिसीवेबल्स के अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, इन्वेंट्री, लायबिलिटी टू अक्रूड बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट पेंशन प्लान, रिकॉर्ड वैल्यू क्या है, आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट एंड द लायबिलिटी फॉर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स इन एन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स. A schedule of externally managed assets and income of a private pension plan including the related notes. तो what will be the schedule क्या होगा, externally managed assets and income of a private pension plans. हम क्या बोल रहे हैं कि what will be the examples, because examiner may directly ask the question that what are the example as per SA 800. What will be the example as per SA 805 and all such thing. मम्मी एक मिनट आ रही हूँ. घर में आ गए. तो हम ये बोल रहे थे कि एग्जांपल्स क्या होंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. तो व्हाट ऑल कैन बी द एग्जांपल्स. तो हम बोल सकते हैं कि खुद से बताते हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, लायबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट्स और प्राइवेट पेंशन प्लान, रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स और द लायबिलिटी for incurred but not reported claims in an insurance portfolio including the related notes. A schedule of externally managed assets and income of a private pension plan including the related notes. Schedule हो सकता है externally managed assets का, income of a private pension plan including the related notes. A schedule of the net tangible assets including the related notes. हम क्या बोलते हैं, schedule of the what? Schedule of the tangible asset including the related notes. A schedule of disbursement in relation to lease property including the explanatory notes.
A schedule of profit participation or employee bonus including the explanatory notes. तो what will be, all will be the examples क्या होंगे? हम क्या बोलते हैं examples क्या होंगे? Specific elements, accounts और items of financial statement के examples क्या होंगे? Account receivable allowance for provision of account receivable allowance for the doubtful debts, inventory, the liability of accrued benefit of a private pension plan, the recorded value of identified intangible assets, and the liability for incurred but not reported claims in an insurance portfolio, including the related notes. A schedule of externally managed assets and income of private pension plan, including the related notes. हम क्या बोलते हैं? Schedule of what? Schedule of externally managed assets. There will be what? There will be the schedule of externally managed assets, income of private pension plan, including the related notes. A schedule of net tangible assets, including the related notes. Then there may be the schedule of net tangible assets, including the related notes. A schedule of disbursement in relation to lease property, including the explanatory notes. And a schedule of profit participation or employee bonuses, including the explanatory notes. So what all will be the examples of the specific elements? क्या क्या examples हो सकते हैं of the specific elements, accounts of the items of financial statement? Account receivable, allowance for doubtful accounts, receivable inventory, the liability for accrued benefit or a private pension plan, and the recorded value of identified intangible assets, the liability for incurred but not reported claims in an insurance portfolio, including the related notes. A schedule of externally managed assets, income of a private pension plan. Schedule of what? Schedule of externally managed assets, income of private pension plans, including the related notes. A schedule of net tangible asset, including the related notes. A schedule of net, हम क्या बोलते हैं? Schedule of net tangible assets, including the related notes. A schedule of disbursement in relation to lease property, including the explanatory notes. A schedule of disbursement in relation, schedule of disbursement in relation to lease property, including the explanatory notes. हम क्या होता है? Schedule of disbursement. A schedule of disbursement in relation to lease property, including the explanatory notes. A schedule of profit participation or employee bonuses, including the explanatory notes. So what all can be the examples of the specific elements, accounts, the account receivables, the provision for हम क्या बोलते हैं? The accounts receivables, allowance for the doubtful debts, the inventory, the liability of accrued benefits, the private pension plan. उसके बाद है schedule of externally managed assets, a schedule of externally managed assets and the income of private pension plan, a schedule of net tangible assets including the related notes, a schedule of disbursement in relation, a schedule of disbursement in relation to lease property including the, a schedule of disbursement relating to the lease property including the explanatory notes, a schedule of profit participation or the employee bonuses including the explanatory notes. उसके बाद there are two questions which is based on ऐसे 805 एंड फर्दर उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा. तो देर आर टू क्वेश्चन. फर्स्ट बोल रहा है CA एम सूर्या इज ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच इज प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इट्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें ऐसे 800 आ गया. ही इज ऑल्सो ऑफर्ड एन ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 805 भी आ गया. अपेयरिंग इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट? डिस्कस द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हिज ऑडिट अप्रोच इन सच अ सिचुएशन. तो हमें डिस्कस करना है. ओके. CAG is offered appointment for audit of trade payable of financial statement of a company. However, financial statement prepared under the Companies Act 2013 are audited by CA Jignesh. Discuss why it would be practically difficult for G to perform such audit. CAG is offered appointment for audit of trade payable of a financial. However, financial statement under companies are audited by CA Jignesh. उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स और द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए ही बोल रहा है, दूसरे के लिए नहीं बोल रहा है. तो इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, येस, बिकॉज ही डू नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. एक रीजन तो ये आ जाता है. इसके बाद सेकंड में ये आ जाता है ही डज नॉट हैव अ सफिशिएंट एविडेंस टू कोरबोरेट द डिफरेंसेस इन ऑल. तो ये दोनों स्टैंडर्ड जो है हमारे ऐसे 800 और 805 से सिंपलर है. तो हम इसको भी देख लेते हैं स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है इन दोनों के बारे में. Three and four based on this.
तो हम क्या बोलते हैं, जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. If prepared in accordance with the special purpose framework, SA 800 also applies to the audit. In the given case, financial statements of the entities are prepared in accordance with the financial reporting provision of a contract. It is a special purpose framework. The audit of financial statement prepared in accordance with the special purpose framework is also offered to the audit of trade receivables appearing in the above financial statement, which relate to the audit of the elements of financial statement prepared in accordance with the special purpose framework. Hence, his audit approach should include considering the requirement of both the essays, SA 800 and 800 parts. Compliance with the requirement of essay is relevant to the audit of a single financial statement or the specific elements of the या तो single financial statement, for example cash flow, या फिर specific elements of the financial statement that may be not practicable when the auditor is not also not engaged to audit the entity's complete set of financial statement. In such cases, the auditor often does not have the same understanding of the entity and its environment, including the internal control, as an auditor who also audit the entity's complete set of financial statement. Accordingly, the auditor may need further evidence because he does not have the understanding of the entity's internal control accounting records, and he need further evidence to corroborate the evidence acquired, and he need the additional evidence to corroborate the evidence जो भी है evidence acquired from the accounting records. In case of audit of specific elements of financial statement, certain assets require audit work may be disproportionate to the element being audited. If the auditor concluded the audit of single financial statement or the specific elements of financial statement in accordance with the essays may not be practicable, the auditor may discuss with the management whether another type of engagement might more be प्रैक्टिकेबल. तो यहाँ से स्टडी मटेरियल का तो सारा पार्ट हो जाता है. अब हम कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं क्विक रिकैप देने की कोशिश करती हूँ कि हमने ऐसे 800 पार्ट्स में क्या पढ़ा है. तो ऐसे 800 पार्ट्स सिंपली क्या था कि ऑडिट ऑफ दी single financial statement जैसे कि कैश फ्लो और द स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा तो यही था. चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. दो जगह पे फैक्टर्स को डिस्कस किए थे, तो हमें फैक्टर्स याद होने चाहिए और नॉर्मल इन लैमन लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती है तो हमें वो पता होना चाहिए. तो एग्जैक्टली तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या एग्जैक्टली पता होना चाहिए अंडर दी ऐसे 805 के अंदर. तो लेट्स डिस्कस, लेट्स रिकॉल इट टुगेदर. तो ऐसे 805 ऐसे 805 क्या होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द स्पेशल कंसिडरेशन audit of a single financial statement or the specific elements accounts or items of financial statement. ठीक है. a single financial statement or element of a financial statement means elements हो गए, accounts हो गए, items हो गए financial statement. जैसे कि सिंगल मतलब कि कैश फ्लो कितनी बार बता दिया है, एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल एंड ऑल. The related notes ordinarily comprises a summary. Related notes यानी कि summary of significant accounting policy, including the related notes. Related notes मतलब क्या होता है, basically ordinarily comprises the summary of the significant accounting policies and other explanatory information जो भी relevant होंगे to the, मतलब कि related notes, the summary क्या होगी of the financial summary of the significant, what will be the summary of the significant accounting policies and other explanatory information जो भी relevant होंगे to the financial statement or the element. तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या होंगे ऑफ द एलिमेंट्स, द अकाउंट रिसीवेबल्स, देन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी, शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स एंड इनकम ऑफ. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, what will be the examples of elements. तो examples क्या होंगे एलिमेंट्स के, अकाउंट रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स, द प्राइवेट पेंशन प्लान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद हमारा आता है कि द शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग द शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि हमने ऐसे 800 में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर एग्जैक्टली द एग्जांपल्स ऑफ ऐसे 805. ऐसे 805 के एग्जांपल्स क्या है, तो सबसे पहले तो है अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अलायंस फॉर डाउटफुल डेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, यानी कि जो आइटम्स है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स और द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री. उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया चलो ठीक है एक एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद आ गया कि शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स and income of private pension plan. तो शेड्यूल के externally managed assets, what will be the schedule of externally managed assets, शेड्यूल क्या होगा of externally managed assets का और the private pension plan. तो what will be the schedule of externally managed assets,
शेड्यूल क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज असेट्स, हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द शेड्यूल, व्हाट विल बी द शेड्यूल, शेड्यूल क्या होगा ऑफ एक्सटर्नली मैनेज असेट्स एंड द प्राइवेट पेंशन प्लान। उसके बाद शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग द नोट्स, तो सबसे पहले तो अकाउंट रिसीवर्स, नोट्स, इन्वेंट्री, ये सब आ गया। फिर शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स, व्हाट विल बी द शेड्यूल क्या होगा, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट पेंशन प्लान। फिर शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट इंक्लूडिंग द नोट्स, शेड्यूल क्या है, नेट टेंजिबल एसेट्स और इंक्लूडिंग द notes. We schedule of disbursement in relation to the private in relation to the lease property including explanatory notes. Schedule of disbursement in relation to lease property और उसका notes. Schedule of profit participation और employee bonuses. Schedule क्या है, profit participation, employee bonuses की. तो examples क्या सीखे हमने, account receivable, inventory, payables, allowance for doubtful debt, ये सारा. Okay. उसके बाद शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा फॉर व्हाट, एक तो फॉर द शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज असेट्स एंड द प्राइवेट पेंशन प्लान, शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल असेट्स इंक्लूडिंग द नोट्स, शेड्यूल ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेटरी नोट्स, and schedule of profit participation, what will be the schedule of profit participation and the employee bonuses. SA 805 deal with the special consideration in application of SA 100 to 700 with respect to audit of single financial statement or the element of financial statement. It is not applicable to the report of a component auditor which is issue report of a principal auditor for the purpose of audit of financial statement. ये override करता है other essays को. Not apply ऐसे 805 वहाँ नहीं लगेगा जहाँ report of a component auditor issue as a result of work performed on the financial information of a component at the request of a group engagement team for the purpose of audit of group financial statement. Objective क्या होगा, special consideration जो कि relevant होगा to the acceptance of the engagement planning and performance and forming an opinion. कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, उसमें क्या होगा कि SOF दैट इज द SOF यानी कि एप्लीकेशन क्या ऐसे इसका ऐसे 200 रिक्वायर द ऑडिटर कंप्लाई करना होगा आपको सारे स्टैंडर्ड्स का जो कि रेलेवेंट है टू द ऑडिट अनलेस द एंटायर एसेस इज नॉट रेलेवेंट. This is applies to the audit of single financial statement even if audit also applies to the audit of a complete set of financial statement. If auditor not also engaged to the audit of complete set of financial statement, consider कीजिए practicability of audit. आपको क्या करना होगा, consider करना है the practicability. आपको क्या करना होगा, consider करना होगा the practicability of the audit of single financial statement is specific element in accordance with the essays. Compliance कीजिए relevant essays का जो कि not practicable है in a single element when auditor is not also engaged to the audit of a single financial statement. Audit of financial statement as not have understanding of the entity's internal control accounting record. Use कीजिए आप, what you need to do is use कीजिए further evidence so that to corroborate audit evidence. Need आप अगर आपको further evidence की जरूरत है, need further evidence to corroborate the audit evidence acquired from the entity's accounting records and all. Certain essays require audit work may be disproportionate extensive work to element being audited. It may not be practicable because audit effort required. Auditor conclude that an audit of single financial statement element as per the essays may not be practicable. The auditor may discuss with the management whether another type of engagement might be more practicable. Applicability क्या होगी, FRF ऐसे 210 required. Determine the applicability of FRF applied in the preparation of single financial statement. Determine whether the applicable financial reporting framework will result in a presentation that provide adequate disclosure to enable the users to understand information conveyed in the single financial statement or the element. जो भी single financial statement element जो भी prepared होगा as per the financial reporting framework established by an authorized or recognized standards setting organization for preparation of complete financial statement. Determine कीजिए acceptability whether requirement relevant to presentation provide adequate disclosure. Form कीजिए an opinion. Expected form of opinion depend upon the applicable FRF and the law and regulation. ऐसे 210 required at the agreed terms of engagement including the expected form of report to be issued. Consider the expected form of opinion appropriate है in the circumstances. Auditor decision as to the expected form of opinion is a matter of professional judgment. Consideration when planning and performing an audit. तो ऑडिटर जो है shall adapt करेगा all the relevant essays to the audit जो भी necessary है in the circumstances of the engagement में. Careful consideration of relevance of each essay is necessary. Essays such as essay 240, 550, 570 are applicable are the principal relevant. This is because the effect of related party transaction or the incorrect application of the going concern assumption under the applicable FRF.
ऐसे 260 require auditor to determine the appropriate person with whom to communicate. People overseeing the preparation of single financial statement specific element might be different from those people who overseeing the full set of financial statements, so the application of the communication requirement is modified. Essays for the audit of full financial statement need to be adopted necessary in the circumstances when applied to the audit of single financial statement. For example, written representation from management about the complete set of financial would be replaced by written representation about the single set of financial. जब हम ऑडिट करेंगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the full financial statement, audit evidence obtained as a part of audit of a full financial statement may be useful, but auditor need to plan and perform the audit of single financial statement to obtain the sufficient appropriate audit evidence. Some items of a complete financial statement may be interrelated with the element of financial statement. Auditor need to perform procedures on interrelated items also and cannot consider single financial statement element in isolation. Materiality हम क्या बोलते हैं, जो materiality होगा for the single financial statement may be lower than materiality for full financial statement. This will affect the nature, timing and extent of audit procedures and the evaluation of uncorrected statement. कैसे हम फॉर्म करेंगे ओपिनियन, कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, तो अप्लाई करना है हमें रिक्वायरमेंट एज पर ऐसे 700 as well as when applicable as per ऐसे 800 as well as the reporting requirement in other essays जो भी adapted है इसे necessary in the engagement. ऐसे 700 बोलता है हमें requires to evaluate whether the financial statement provide adequate क्या financial statement जो है वो provide करेगा adequate disclosure. So for audit of single financial statement element, ensure that the financial reporting framework requirement provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the information to be conveyed in the financial statement or the element. Then comes the going concern. What will be the going concern? Depending on applicable FRF use in the preparation of a single financial statement element and depending upon how the SA 570 applies to debt engagement in audit report to description of a management responsibility relating to the going concern may need to be adapted as necessary. ऐसे 700 जो बोलता है required to communicate the audit matter as per SA 701 for audit of complete set of financial statement. Other information as SATSO-B is applicable when two report containing accompanying the single financial statement or the specific elements of financial statement for purpose of providing information related on a matter presented in a single financial statement. और जो matters है और हम क्या बोल रहे हैं और जो भी matters होंगे signature of auditor. What will be the signature of auditor? Signed by the engagement partner, personal name, also the name of firm. सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर में क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर अपना पर्सनल नेम में साइन करेगा और फॉर्म के नेम में भी मेंशन किया जाएगा मेंबरशिप नंबर और फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर. If also engaged to report on a full financial statement, issue the separate report, separate opinion. If audited is जो published with the audited full financial presentation of the SFS should be differential from full financial statement. Otherwise, do not issue report on the SFS until satisfied with differentiation. Consider the implication of full financial statement on single. Auditor should consider the implication of audit report of a single financial statement element if any of a certain matter included in the audit report in a complete set of financial statement. It is a matter of professional judgment to consider whether the matter included in the audit report of full financial information के relevant होगा for audit of a single financial statement. कौन से ऐसे फैक्टर्स जो कि रेलिवेंट होंगे. अब नाउ हमें फिर से फैक्टर्स लर्न करने हैं. पहले हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, इससे पहले के एग्जांपल्स क्या होंगे. एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स एंड ऑल, the schedule of the externally managed assets and the private pension plans, the schedule of the net tangible assets including the notes, the schedule of the leased property including the explanatory notes and the employee bonuses and the profit plans. ये सब पढ़ा था. अब हमने फैक्टर्स पढ़ना है. फैक्टर्स क्या होंगे जो कि रेलिवेंट होंगे इन कंसिडरिंग दिस इम्प्लीकेशन, दैट इज what will be the nature of matter described in the audit report of a complete set of financial statement and in extent to which it relates to the सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट. तो नेचर क्या होगा मैटर का. फिर परवेसिवनेस क्या होगा मैटर का जो भी डिस्क्राइब होगा इन दी ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. परवेसिवनेस क्या होगा, नेचर क्या होगा मैटर का. परवेसिवनेस क्या होगा मैटर का. नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा डिफरेंस ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ. The extent of the difference between the period covered by the complete set of financial statement compared with the period of a single financial statement. क्या टाइम इलैप्स है since the date of auditors report on the complete set of financial statement. कितना टाइम इलैप्स होगा since the date of auditors report. कितना टाइम इलैप्स होगा since the date of the auditors report on the complete set of financial statement.
If qualification and full financial statement relates to the debtor and the specific element is the debtors only, so there will be implication. However, if the specific element is long-term debt, then less likely to impact. In case full financial statement matter do not have any implication, even when certain matter included in the auditor's report on the complete set of financial statement do not have implication for the audit of the financial statement. उसके बाद auditor may consider appropriate to refer that in OM para or the single financial statement element modified opinion 705 के according, UM para 706, MU 570, uncorrected material message statement or other information that these matter may have on the audit of single financial statement or the specific element of for the auditor's report thereon. In case of full financial statement is adverse or disclaimer, determine the effect on single financial statement. If necessary to issue adverse or disclaimer opinion on full unmodified opinion on such SFS cannot be expressed. However, for separate audit of specific element or unmodified opinion can be expressed. If it is not prohibited by law and regulation, अगर prohibited ना हो, इस पर भी एक separate question आ सकता है. If it is not, कब आप modified opinion and ये सारा कर सकते हैं अगर not prohibited by law and regulation. Audit report on the element is not published together with the audit report on a full financial statement. When it is not prohibited by law and regulation, audit report on the element is not published together with the audit report on a full financial statement. An element does not constitute a major portion of the full financial statement. Shall not issue unmodified opinion on a single financial statement adverse opinion at element even if single financial statement is not published together because single financial statement deemed to constitute a major portion of those financial statements. Modified EOM on full financial statement even if those modification EOM does not relate to element, then also may refer that modification in OM para of a single financial statement report relevant to the user's understanding this. Disclaimer on a full financial statement with respect to result and operation where relevant, an unmodified opinion regarding the state of affairs is permitted since the disclaimer of opinion is being issued in respect of results of operation cash flow only and not in respect of the financial statement as a whole. तो यही है हमारा